Good morning, students. Again, I'm your English grammar teacher. Today, I am come up with another chapter explanation. So, what is new today? What we're gonna be learn today? That is all about the sentence, simple, compound, or complex. It means today we're gonna be learn about the further classifications of the sentence, which are three divided into three categories: simple sentence, compound sentence, and the complex sentence. So what these are? So we have discussed earlier, we talk about the classification of the sentence, that earlier what we already discussed, the sentence and its kinds, that is declarative, interrogative, imperative, and exclamatory sentence. Okay, but further this sentence divided into further categories, divided into some other different type. Like if we talk about types of sentence, types of sentence, that is further divided into three categories. First is simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Okay, so these are the three categories that for this sentence further divided into its types. So before we start explaining, learning about related all three categories, let me just to recapitulate about the verbs, which we have already discussed in the previous classes on previous session of the explanation, that is finite verse and infinite verse. So first we just again try to understand what are the finite verbs. So finite verbs. What is finite verb? Okay. So finite verbs. The finite verbs are, if we try to explain in the words finite verb, then the words are, to define it, the finite verbs are depend, control, or govern by the person or and number of the subject. So basically finite verbs stands for, the finite verbs is control, governed by the person, यानी जिसे हम कहते हैं subject, and the number of the subjects. It means our subject belongs to singular or plural. Okay, let's take an example to make this statement more clear. So let's say, for example, I am driving the car. So here this is subject, this is verb. Again, next example, Renu drives the car. Next, they drive the car. So here we can notice one thing, that as
our subjects of the sentence is being changed. The verb is accordingly changed. Here the I singular, subject is singular, then I always belongs to the verb is am. Here he, she, it or name Renu, and here what we use as a verb SIS with the main verb. So here we can clearly see and understand that according to subject the verbs are being changed in all the three cases. All the three cases according to subject verbs are being changed. Okay, so in the simple words we can elaborate it, we can understand it, we can say it that in simple words. In simple words, if we try to define it, then the definition is simple. The main verb that can be changed according to the, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है कौन सी क्या कहलाती है? हमारी फाइनाइट वर्ब्स. इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. Okay, same vice versa. If we talk about to define, if you try to define non-finite verbs, it's just different opposite. That वो क्या होगी? The main verb that cannot be changed according to the subject, that are called in non-finite verbs. So let's see the non-finite verbs. What are these? Non-finite verbs. Why I'm trying to explain before the is sentence type, just because of with the help of this explanation, with the help of the finite and non-finite recapitulation understanding, we can more understand, we can understand in a better way the sentence further. The sentence time which are divided into three categories, as we already discussed: simple, compound and complex. So non-finite verbs, same, the main verb that cannot be changed according to subject. Let's say example इसका ले लेते हैं to make you guys understand. For example, I want to eat something. He wants to eat something. They want to eat something. So here all the three cases according to subject, as our subject being changed according to the example. See this, the main verb is eat, and in all the three cases this main verb is not being changed. So first of all, the one indication to identify the non-finite verb is that according to subject the verb cannot be changed. Secondly, एक और एक बहुत एक कॉमन तरीका है, इज़ अ कॉमन वे टू आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इज दैट एवरी मेन वर्ब, बिफोर एवरी मेन वर्ब्स वी कैन फाइंड दैट इज़ टू. सो अगर आपको लग रहा है किसी भी सेंटेंस में टू यूज़ हो रहा है मेन वर्ब से पहले, तो दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. सो व्हाट आर दीज नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉट फाइनाइट. Hope I'm clear with this finite verb, non-finite verbs. So let me just
take you for the now sentence type. So first was simple. So here simple sentence. Simple sentence. What are these? The sentence that having only one finite verb is called or is known as simple sentence. Okay, for example, let's see. He sat in the park. So finite, these examples we have taken to understand about the finite verbs and non-finite verbs. And now we talk about the sentence or its type. So first sentence, which is classified as an simple sentence. So how we can identify it? If any statement or a group of words having only one finite verb, this is finite verb, that sentence is called or known as simple sentence. Okay, same way. Next is compound. So next type is compound. Sentence. So let's take an example first to make this type of sentence understand. Ria sat in the park. And the children played on the swings. Okay, so here two different sentences. First is Ria sat in the park. Second, the children played on the swing. यानी रिया क्या कर रही थी? दिस इज सब्जेक्ट. रिया सेट इन द पार्क में बैठी और बच्चे प्लेड ऑन दी स्विंग, झूले पे झूले. तो आप देख रहे हैं ये एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट क्लॉज हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं. आप देख रहे हैं दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, दो इनफाइनाइट वर्ब्स हैं, हाँ, और दो ऑब्जेक्ट हैं सेम. तो हम इसे सिंपल वर्ड्स में क्या डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू मेक द डेफिनेशन इन द सिंपल वर्ड्स ऑफ इट. According to example, a sentence that having two different clause, क्लॉज एक देखिए रिया पार्क में बैठी, जो डिफरेंट क्लॉज है ये कहलाते हैं क्लॉज. एक ही सेंटेंस में टू डिफरेंट क्लॉज हैं. एंड एवरी क्लॉज
having clause having its is subject and finite verbs। देख रहे हैं आप, दोनों क्लोज हैं, दोनों सब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्लॉज हैं, और हर क्लॉज का क्या है, सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब्स भी है। इसका भी सेपरेटली सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब्स है। एंड तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई का द बेस्ट वे इज़ अ सेंटेंस हैविंग द टू डिफरेंट क्लॉज। एक ही सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टू डिफरेंट्स आर दीज टू डिफरेंट्स एंड these two different clause are joined or add by the conjunction। कंजक्शन क्या होता है, वो वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, दैट इज कंजक्शन। या द वर्ड्स दैट getting connected that connected the two different clause or sentence together, that is called conjunction। ये कौन सा कंजक्शन के साथ जोड़ता है, that is and। ठीक है, तो इन डिफरेंट वर्ड। तो अब क्या ये सेंटेंस हो गया, कैसे पहचान लेंगे हम, तो दोबारा देख लीजिए। रिया sat in the park and the children played on the swings। समझ में आ गया। पहली बार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई सबसे पहले हम रैंडमली क्या देखेंगे, सेंटेंस में एंड लगाए, बिल्कुल ठीक है, एंड लगाए तो यानी सिंपल हमें समझ में आ जाएगा कि दिस इज फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस, दैट इट कुड बी चांस दिस सेंटेंस कुड बी बिलोंग्स टू द कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड चीज what we notice that this sentence consists with the two different clause। if we remove or just cover for a while this conjunction, then the two different clause are identified easily। so Riya sat in the park and every clause having its subject and separate finite verbs। okay, so this is clause 1 and this is clause 2। ठीक है, hope we understand what is the compound sentence। same way if we talk about the complex sentence, so what are these? See, yes, let's look at this example। Kavita sat in the park। okay, here also this is Kavita sat in the park। so here again this is what, finite verb, this is our subject and this is in the park object। okay, so again it was pleasant, this is clause number 2 and this is clause number 1। यानी अगेन अगर हम if we try to identify the complex sentence, this also combine or consist with the two different clause getting connected, also getting connected with the conjunction। But what's the difference between this compound and the complex sentence, or making the making the complex sentence separate with the कंपाउंड सेंटेंस? एक सिंपल सा तरीका हम कैसे आइडेंटिफाई करें, देखिए अभी हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लॉज होते हैं, हर क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। सेम वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो डिफरेंट क्लॉज हैं, कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है हर एक सब्जेक्ट। इसकी भी देखिए ये सब्जेक्ट है, क्लॉज 1 में भी, क्लॉज 1 देख रहे हैं हम, सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब्स है। क्लॉज 2 का भी हम देख रहे हैं, इट वॉज प्लीजेंट, ये कॉल क्लॉज 2 है, इसका भी ये क्या है, सब्जेक्ट है एंड दैट इज फाइनाइट वर्ब। ठीक है, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन
आप देखिए, अब अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें, एक क्लॉक फर्स्ट को देखें, क्लॉज वन को, कविता सेट इन दी पार्क, यानी सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इसका कंप्लीट सेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कविता बैठी कहाँ, पार्क में। सेम वे अगर हम क्लॉज नंबर 2 को देखें, जो कि है इट वॉज प्लीजेंट, इट वॉज प्लीजेंट, बहुत सुहावना था, इट वॉज वेरी प्लीजेंट, बट किसके बारे में बोल रहा है ये, क्या क्या प्लीजेंट था, कहाँ प्लीजेंट था, कब प्लीजेंट था। तो यानी कि सेंटेंस में ठीक है सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, लेकिन इसका सेंस जो है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है। तो जस्ट दिस माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन, दिस माइन्यूट डिफरेंस इज दैट डिफाइन और आर दैट मेक सेपरेट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस with the compound sentence. So again, hope you understand all three types of its sentence. Simple sentence, again we try to recapitulate the sentence types. So first is simple, yani the sentence having only one finite verb is called simple sentence. If we talk about the complex sentence, so again, what is compound sentence? Second is compound sentence. So the sentence that having two different clause, every clause having its subject and its finite verbs. Also, these both different clause are joined or getting connected by the conjunction and. So these indications help us to identify the compound sentence, and talk about the complex sentence. Finally, the same as compound sentence, this complex sentence having two different clause, every clause having its subject, finite verbs, but what's the difference, that one clause, the main clause having its complete sense, and the second clause, वन ऑफ द क्लॉज, अगर हम इस क्लॉज की बात करें, सेंटेंस के एग्जाम्पल में बात करें, तो इट वॉज प्लीजेंट, अगेन समझ लीजिए। तो ये क्या है, दूसरा जो क्लॉज अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो सेंस है वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो यही डिफरेंस है टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द what we have all covered this chapter through the chapter explanation, finite verbs, non-finite verbs, subject, sentence types. Hope you learn it from it, and again just drop your text as an query. We'll try to connect you guys with you in the short span of time while making the telephonic conversation. Thank you so much and have a nice time.